So hello everybody, welcome back to Kingdom of Learning. Today is our lesson 2 of our 7-day course which we have started. Our day 1 was the introduction of this course, then day 2 was our lesson 1, and this is the third video which is our lesson 2. 5 lessons will be there in total, and 7th video will be question answer round. So you can ask me questions. I'll be answering all your questions in the 7th video. So now let's start. First of all, let me tell you what we are going to do in this video. First of all, I'll be telling you usage of some prepositions. Some common prepositions like on, in, at, and into and under. These prepositions we will be doing. Then I'll be telling you 10 new words, and then there will be conversation on the same, means covering up the same words, and after that story time. The topic for our conversation will be dinner table pe charcha, means that will be a general conversation between the guest and the host during dinner, means they both will be taking dinner, and how to converse, that will be shown to you. And then I'll be telling you some stories from my personal life, from my childhood, about my eating habits and which things I like the most and all. So that will be quite fun if you are interested. Then similarly means I'll be telling you one adequate, and then at last one test of 5 marks. So we will be covering up all these things in today's video. So let's start. So first of all, we are going to see the rules. Rules means we are going to see how to use in and into. First of all, for position, means if you say there is lot of water in this glass, so we will use in, means for stable position, that is glass के अंदर बहुत सारा पानी है. But if I say he threw the ball into the water, कि अगर पानी है उसमें रखा हुआ है तो इन. अगर मूवमेंट में है कि पानी ऊपर से नीचे गिराया या बॉल को गिराया, into, right? So means you can say the bird dipped into the river. The bird was in the water, the bird dipped into the river. So that is the difference. So now we will see the difference between in and at for place. For if we say I live in Delhi, so if you are referring to a big city or a big place, you will use in. And if you say he lives at Janakpuri, so if you are referring to a small place or a town or a village, then you will use at. So that will be the difference between in and at. Now we will see the difference between in, on and at when we refer to time. So if we say like he was born in January, he went there in monsoon season. So if we are referring to months or you can say some particular times, then we will use in. But for days we will use on. He came to my house on Sunday. For days we will be using on, and for a time, for a particular time we will use at, means the train will arrive at 8 o'clock. So that is the difference. I can repeat, for seasons and for months or for any morning, evening, all these things we will use in. For dates we will use on, for days and dates, and for particular time we will use at. So that is the difference between in, on and at for time. So these are the main rules of prepositions which you should know. So now is our second part. Second part means our vocabulary building. So here you can call it new words, new expressions, anything, but the point is that you have to start using them in your spoken and written English. Our vocabulary will be related to food,
मीन्स वी हैविंग अ कॉन्वर्सेशन ऑन डिनर टेबल पे चर्चा, तो डेफिनेटली वहां पर खाने पीने की बातें होंगी, तो हमें फूड से रिलेटेड वोकैबुलरी के बारे में पता होना चाहिए. सो आवर फर्स्ट वर्ड विल बी स्टेल. स्टेल, STALE. स्टेल मीन्स बासी, कल का रखा हुआ खाना. तो एक फ्रेश होता है और एक स्टेल. सो आवर सेकेंड वर्ड विल बी फ्रेश. सो यू कैन यूज दिस फूड इज फ्रेश. वी शुड ईट फ्रेश fruits and vegetables. We should not eat stale food. बासी खाना हमें नहीं खाना चाहिए. तो you have to use like that. Then our third word will be savory. SAVOURY. Savory means you can use delicious, simple word. If you want to use some good word, if you want to sound intelligent, very intelligent, then you can use savory. The food is very tasty, savory, right? Then our fourth word will be bitter. Bitter means kadwa. Like some fruits, some vegetables and some flowers taste bitter. So you have to use the word bitter. These are very common words, but how to use them, that is more important. Then sour. SOUR, khatta. Sour means khatta. Lemon is sour, right? It's not sour or sour. It is sour. So you have to see the pronunciation part also. Means your focus should be on all the aspects to improve your grammar, to improve your vocabulary, improve your pronunciation, improve your spoken skills, to improve everything, right? So that is the main focus of these classes. Now our next word will be dessert. Dessert means sweet dish. Means when you eat a sweet dish after your food, you call it a dessert. Then our next word will be raw. RAW. रॉ होता है कच्चा. मीन्स कुछ सब्जियां, कुछ फ्रूट्स जो होते हैं हम रॉ खाते हैं, उनको कच्चा खाते हैं. इंसानों को नहीं. ऐसा सुना जाता है ना, तुझे कच्चा खा जाऊंगा, नो. तो रॉ फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स. RAW. नेक्स्ट वर्ड इज सपर. सपर इज डिनर, राइट? डिनर से थोड़ा पहले होता है. अर्ली डिनर यू कैन कॉल इट, बट वी कॉल इट सपर. SUPPER. सपर. सपर मीन्स डिनर. Then our next word is undercooked. कि अगर आपका खाना अच्छे से नहीं पका हुआ है तो you will call it undercooked. Even ज्यादा पका हुआ है तो you can call it overcooked. तो ये words आप घर में भी यूज कर सकते हैं कि अगर आपकी मम्मी ने खाना बनाया है वो थोड़ा कच्चा रह गया है तो you will say कि this food is undercooked. This food is overcooked. अगर ज्यादा कुछ गल गया है तो overcooked, otherwise undercooked. So these are the things which you have to start using to impress your parents also. Your parents should also come to know कि बच्चे कुछ सीख रहे हैं, like that. Then our last, not a word, this is an expression, is I am full. Means जब आप पूरा पेट भर जाता है आपका, आप कुछ खा चुके होते हैं पूरा और आपका अब और खाने की कैपेसिटी नहीं होती, तो you have to say I am full. कि अगर आप किसी के घर पे गए हैं, कोई आपसे बार बार बोल रहा है कि ये खा लो वो खा लो और आप नहीं खाना चाह रहे, तो यू विल से सॉरी आई एम फुल, कि मेरा पेट भर चुका है. सो दीज एक्सप्रेशंस यू हैव टू यूज. सो नाउ वी विल सी द practical aspect, means practical part of using all these expressions in the conversation part. The topic of conversation is dinner table पे चर्चा, because चाय की चर्चा तो हमारी पिछली वीडियो में हो चुकी थी. तो अब हमारा डिनर टेबल पे कॉन्वर्सेशन चलेगा बिटवीन मी एंड माई सन अरिंजे एज यूजुअल. सो एंजॉय दैट. Please come, the dinner is ready. Oh, sure. My mom has cooked this fresh food for you. Please have it. Wow, it's very savory. I'm really glad to have it. Actually, I was eating stale food at my mess. Even sometimes they served bitter and sour food also. Oh, please have some more. Oh, I'm full now. Okay, please taste this dessert now. Wow, it's really yum. Thank you for this nice supper. It's my pleasure. We come to our fourth part, that is story time. So because we are discussing a lot about food, खाने पीने की ही बातें हो रही हैं, तो I want to tell you some habits of myself in childhood.
थिंग वेरी इंटरेस्टिंग आई रिमेम्बर फ्रॉम माई चाइल्डहुड कि जब दोपहर होती थी तो गर्मियों में मोस्टली सब लोग सो जाते थे घर में, लंबी दोपहर होती थी तो सब सो जाते थे, बट आई नेवर स्लेप्ट इन द आफ्टरनून। मुझे कभी नींद नहीं आती थी आफ्टरनून में। तो क्या होता था कि जब सब सो जाते थे तो मैं, एक शॉप थी हमारे घर के पास, मैं वहां जाती थी, वहां से मैं 4 लड्डू पैक करवा के आती थी या 4 बर्फी के पीस मिठाई वो पैक करा के आती थी। एक मैं बाहर वाले रूम में बैठती थी, एक प्लेट में निकालती थी और उनको खाती थी। जस्ट इमेजिन कि वैसे मुझे मोटे होने का रहता था बट मैं मिठाई बहुत खाती थी। हाँ, एंड वन मोर इंसिडेंट आई रिमेम्बर, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी फनी, कि मैं कितना खा जाती थी बचपन में। कि व्हाट हैपेंड वन डे, कि उस टाइम में रिक्शा बहुत चलते थे तो बच्चों को जनरली रिक्शा में पीछे बिठा दिया जाता था और पेरेंट्स आगे बैठ जाते थे। तो वंस वी वेंट टू द मार्केट एंड माई फादर बॉट 1 डजन बनानास, 1 डजन बनानास परचेज किए और मुझे पकड़ा दिए कि पीछे बैठ के पकड़ के बैठो। जब तक हम घर पहुंचे तब तक मैं पूरे 1 दर्जन बनानास खा चुकी थी। सो इट्स वेरी स्ट्रेंज, वेरी शॉकिंग कि अब मैं याद करती हूँ उस चीज को तो आई जस्ट गेट सो शॉक्ड कि मैं पूरे 1 दर्जन बनानास खा गई थी। घर पहुंचते पहुंचते तक हाफ एन आवर लगता होगा हमारे घर तक जाने में। So these are some very very funny incidents from my childhood about my food habits and all. And स्कूल कैंटीन में भी एक चीज और थी कि हमारे स्कूल में कैंटीन होती थी, वहां पे हमें समोसा मिलता था, वो मैं डेली खाती थी। एंड माई एल्डर सिस्टर वॉज देयर इन द स्कूल, शी नेवर वेंट आउट ऑफ हर क्लास, वो अपनी क्लास में बैठी रहती थी और मुझे, ये भी मेरी डेली की ड्यूटी होती थी कि लंच ब्रेक में लाइन में लग के उसके लिए भी समोसा मुझे लेके आना होता था। तो these are some funny stories from my childhood. So actually there's nothing to learn from. So now our time for personal etiquette. So what is the personal etiquette? That if you are having your food with somebody, suppose you are sitting 2 people, 3 people, whatever are sitting on a table, or you are sitting somewhere to have your food. This is your etiquette, never to leave the table until the other person finishes the food. कि जब तक उस दूसरे इंसान का खाना खत्म नहीं हो जाता, जब तक वो नहीं छोड़ देते, वहां से नहीं उठते, तो आपको भी नहीं उठना चाहिए। मीन्स यू हैव टू accompany the person, जिनके साथ आपने शुरू किया था खाना खाना, भले ही आपने खा लिया हो लेकिन आप वेट करेंगे कि उनका भी खाना फिनिश हो जाए। तो दैट इज एटिक्वेट, राइट? सो now we will move on to our last part, that is assessment. So now all of you will check your 5 questions and you have to send their answers in the comment box. Just be careful, remember it कि जिस बच्चे के 25 out of 25 marks आएंगे, their names will be taken out in the last video and you can ask me any questions also. I'll be giving answers to all the questions in the last video also. So secure your name in that video. So be active, answer the questions properly and carefully. And if you have any doubt, you can watch these videos again and you can share them. Do share them with others also, because I'm working so hard. So I want maximum number of students should be benefited from these classes. So we have learnt a lot, I think, today also. So it's time to say bye. So see you in the next video.